Alright students, so last time हमने study किया था crystallization और sublimation. Crystallization basically difference है according to solubility. इसमें हमने 4 steps involve किए थे. पहला step था formation of solution जिसमें हम एक suitable liquid solvent add करते थे जो कि हमारा solid substance dissolve करता था लेकिन किसी किस्म की impurity को usually dissolve नहीं करता था. ठीक, ये सॉल्वेंट ऑफन वाटर होता है लेकिन इसके अलावा हम सॉल्वेंट चेंज कर सकते हैं. हम अपना सोल्यूशन का फॉर्मेशन प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, उसे अच्छी तरह से बनाते हैं. इसके लिए अगर स्टिरिंग रिक्वायर्ड हो तो हम स्टिर भी करते हैं. इस सोल्यूशन को बनाने के लिए हम इसे स्लाइटली वार्म अप भी करते हैं. वार्मिंग अप स्टेजेस में हम ये मेक श्योर करते हैं कि अगर कोई ऐसा सॉल्वेंट हो जो फ्लेमेबल हो तो हम उसके लिए वाटर बाथ या सैंड बाथ इस्तेमाल करें. ठीक है, वार्म मिक्सचर को सेकंड स्टेप पे फिल्टर किया जाता है. ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास फिल्ट्रेशन में जितने इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस होते हैं वो ऑन द टॉप ऑफ फिल्टर पेपर सेपरेट हो जाते हैं जिन्हें हम रेजिड्यू कहते थे. ठीक, इसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप पे एवापोरेशन होती है. एवापोरेशन से हमारे पास जितना एक्सेस सॉल्वेंट होता है वो यूजुअली सेपरेट कर दिया जाता है. ठीक है, और इस सारे के बाद फिर हमारे पास ड्राइंग का प्रोसेस होता है. ड्राइंग को हम itself क्रिस्टलाइजेशन भी कहते हैं. एवापोरेशन से जब एक्सेस सॉल्वेंट रिमूव हो जाता है तो हमारे पास जो है एक थोड़ा सा पोर्शन पीछे बचता है जिसमें बहुत कम अमाउंट में सॉल्वेंट होता है और उसके अलावा ज्यादातर हमारे पास सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं. और फिर ड्राइंग के प्रोसेस में जो सिंपली अंडर द फैन या अंडर द सन हम कर सकते हैं. ठीक है, उससे हमारे पास ये होगा कि हमारे पास प्योर क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे उस सॉलिड के जो हम चाहते हैं. ठीक है, इस तरह से हम एक पूरे प्रोसेस को 4 स्टेप्स में जिसे हम क्रिस्टलाइजेशन बुलाते हैं हम उससे हमारे पास जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो रिमूव कर लेते हैं और एक सॉल्युबल सॉलिड को प्योर क्रिस्टल्स की फॉर्म में ऑब्टेन कर लेते हैं. इस तरह से हम ड्राई करने के दौरान उस कॉन्सेंट्रेटेड हॉट सोल्यूशन को जिसे हम फिल्टर कर चुके होते हैं उसे हम आहिस्ता आहिस्ता कूल ऑफ होने का भी मौका देते हैं. ठीक, तो वो स्लोली कूल डाउन भी हो जाता है ड्राई होने के साथ साथ. ठीक है, ये हमारे पास इस पेज के फर्स्ट पैराग्राफ तक दिया हुआ है. दिस वाज ऑल अ पार्ट ऑफ रिविजन. एनी क्वेश्चंस सो फार? No, sir. Okay, and let's get right to the distillation part. The next process is distillation. Let's go a couple of pages back and take a look at the table that we had. So solid mixtures, powdered mixtures can be separated by different processes. All 4 of the processes are done. Suspension of solid in liquid by filtration or centrifugation are both done as well. Then comes the liquid immiscible part, and separating funnel and decantation processes are complete. Solution of solid in a liquid. To obtain the solid, we use evaporation or crystallization procedure. And now, in order to obtain liquid, we use the distillation procedure. Now, this is an important point which clarifies that why do we pick crystallization as a separation process and when do we pick distillation as one? Now, if we need the solid, we use the crystallization process, which includes evaporation as well. Why? Because in that case, the solid, when dissolved into the liquid is evaporated away and we get the pure crystals of the solid. But what if we want to obtain in the liquid? In that case, distillation would be an important technique and the most preferable one for that matter. देखिए, आपने सॉल्ट को लिया था, सॉल्ट को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया था. अगर उसमें कोई सैंड या सॉइल पार्टिकल्स थे वो फिल्ट्रेशन में सेपरेट हो गए थे. वाटर को एवापोरेट किया, हमारे पास प्योर क्रिस्टल सॉल्ट किया आ गया. बट व्हाट इफ सॉल्ट अगर वाटर में डिसॉल्व्ड है और हम सॉल्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, हम वाटर में इंटरेस्टेड हैं, फिर क्या करेंगे? For example, Saudi Arabia is one of the countries of the world which has a large area which is non-arable and covered by deserts. ठीक है, उसमें deserts बहुत ज़्यादा हैं. बहुत सारे ऐसे अफ्रीकन कंट्रीज हैं जो सहारा डेजर्ट के साथ टच होते हैं, उनका बड़ा पोर्शन डेजर्ट पोर्शन है. फॉर एग्जांपल इजिप्ट, फॉर एग्जांपल अल्जीरिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल सूडान. तो हमारे पास ऐसे कंट्रीज के अंदर वाटर की प्रोविजन अंडरग्राउंड वाटर की फॉर्म में बहुत कम होती है. सऊदी अरब को अपने वाटर नीड्स को पूरा करने के लिए सी वाटर लेना पड़ता है. सी वाटर इज फुल ऑफ सॉल्ट. यू नो, सी वाटर टेस्ट बिटर. इट हैज सो मच सॉल्ट इन इट. ठीक है, किसी चीज में थोड़ा सा सॉल्ट हो तो वो सॉल्टी टेस्ट करती है और किसी चीज में एक्सेसिव सॉल्ट हो जाए तो वो बिटर टेस्ट करना शुरू कर देती है.
अब वो नॉन यूजेबल वाटर है। सी वाटर को हम किसी भी अपने पर्पस के लिए, चाहे वो वॉशिंग पर्पस हो, चाहे वो ड्रिंकिंग पर्पसेस हो, हम उनके लिए यूज नहीं कर सकते। In order to obtain pure water, which can then be used for drinking purposes or for washing purposes, ठीक है, हमें उसके अंदर से salt remove करना है. And definitely we are interested in the liquid. Hence, distillation. So distillation is going to be an important process. Here, the word distillation is also referred in papers as simple distillation. So, जहाँ पर आपके पास use distillation का point mentioned है, ठीक है, let me annotate that for you. जहाँ पर आपके पास ये use distillation का process है, आप इसे use simple distillation भी कर सकते हैं. That way you can differentiate between distillation and the word right below it, which is fractional distillation. So basically, we are going to go with two different types of distillations in your book. ठीक है, यूजली ऐसा होता है क्लास 7 के अंदर, क्लास 8 के अंदर आपने ये दोनों टाइप्स के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन लिया होता है, वेल किया हुआ है या नहीं किया हुआ. I want to make sure that we are all on the same page, so I'm going to go with the very start, making sure that you're doing everything from scratch in order to understand both the distillation types and also what's the difference in between them. See? So moving on to the page we were originally at, we originally started with. Separating a liquid from a solution is usually carried out by distillation. Now this time we're not separating the solid, we're separating the liquid. Now, in case of distillation, the boiling point of liquid is usually much lower than that of dissolved solid. Let me tell you, usually solids have much higher boiling points than liquids, and liquids have much higher boiling points than the gases. Okay? So this is a very important point. Let me tell you, if salt is dissolved in water, the salt that we eat every day, it has a very big difference than the boiling point of water. Okay? And also the melting points. For example, आपके लिए एक बड़ी अच्छी एग्जांपल क्लियर करते हैं, एग्जांपल देते हैं. ये मैं एग्जांपल यहाँ पर रिटन फॉर्म में दे रहा हूँ. यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. वाटर का मेल्टिंग पॉइंट हमने क्या पढ़ा हुआ है, या फ्रीजिंग पॉइंट हमने क्या पढ़ा हुआ है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड. जो सॉल्ट हम डेली लाइफ में खाते हैं, टेबल सॉल्ट, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, 801 डिग्री सेंटीग्रेड. Now that's a huge difference. एक का melting point 0 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरे का 800 डिग्री सेंटीग्रेड है. बॉइलिंग पॉइंट पर आते हैं, जैसा कि बुक में लिखा हुआ है. अगर हम बॉइलिंग पॉइंट को डिस्कस करते हैं, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास वाटर का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड. ऑन द अदर हैंड, बॉइलिंग पॉइंट जो हमारे पास टेबल सॉल्ट का होता है, दैट्स अराउंड 1465 डिग्री सेंटीग्रेड. दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस. ये बहुत बड़ा डिफरेंस है. ये बात वो यहाँ पर करना चाह रहा है. जो सॉलिड्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स बहुत हाई होते हैं, और जो लिक्विड हम सॉल्वेंट के तौर पे यूज कर रहे होते हैं, या जिसे इस वक्त हम डिस्टिलेशन से सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होता है. ठीक है, कहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड और कहाँ 1465 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक, तो ये चीज क्लैरिफाई करने की कोशिश की जा रही है. लिक्विड इज मोर वोलेटाइल देन द डिसॉल्व्ड सॉलिड. सॉलिड्स तो एक्चुअली वोलेटाइल होते ही नहीं है. Liquid volatile होते हैं. Volatile means something that is easily evaporated. ठीक है, which he writes in the next part of the line, which easily can be evaporated off in a distillation flask. So हम distillation flask जब use करेंगे तो easily evaporate हो जाएगा. It is then condensed by passing it down through a water-cooled condenser and then collected as a distillate. This can all be understood by the diagram. Take a look at the diagram at the bottom of the page, figure 2.15. इस फिगर में आपको इस चीज का आइडिया होगा कि हमारे पास एक बड़ा सारा फ्लास्क है. ये जो फ्लास्क आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे है, इसे हम डिस्टिलेशन फ्लास्क भी कहते हैं, but a more appropriate name is a round bottom flask. As funny as it may seem, the name is quite easy to remember. It's round from its bottom, so a round bottom flask. ठीक है, a round bottom flask is usually connected, stopped with a cork that has a hole in it, and that hole is usually adjusted by putting a thermometer inside it. Okay, thermometer is usually a glass thermometer that we use in lab. Okay, now this flask has another diversion in it, on which we actually connect the condenser.
This is a condenser. This whole structure that you can see is a condenser. A condenser is a glass tube which has a pipe going through it, right? All the way from its one end to the other. But there are two more connected ends on this condenser. One side, from one side, the water goes in. This is simple tap water that is going in. ये थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर का रूम टेम्परेचर का टैप वाटर होता है जिसे हमने एक लोअर साइड से इन किया होता है और एक हायर साइड से उसका आउटलेट दिया होता है. हम ऐसा क्यों कर रहे होते हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे होते हैं कि जो भी चीज इस इंटरनल पाइप से पास करेगी वो अपनी हीट एक्सचेंज कर सकती है इस ऑनगोइंग वाटर के साथ. ये वाटर पाइप्स जो होते हैं वो सारा टाइम कनेक्ट रहते हैं. मसलन वाटर इन का जो पाइप होता है ये एक टैप से कनेक्टेड रहता है जो स्लोली इसके अंदर से वाटर पास करता रहता है. which means it's a flowing water. ये स्टैग्नेंट नहीं होता. हम पानी को एक दफा भर कर बंद नहीं करते हैं, वैसा नहीं करते हैं. सारा वक्त इससे वाटर यहाँ से जाता रहता है, इनलेट से फिल करता है इस पूरे पोर्शन को और आउटलेट से रिमूव होता रहता है. It's very good. It's far better if you see the condenser for yourself in the lab or you take a YouTube video for it. ठीक है, तो हम एक YouTube video भी consider करेंगे just to make sure that you understand it properly. और water outlet simply towards drainage होता है, इससे water सारा time out होता रहता है. ठीक. This is known as a condenser. An appropriate name would be a Liebig condenser. Liebig is the name of the scientist. Okay? Although it's Liebig, but sometimes I do make it into two parts just to make sure that for the students it's easy to remember. It's lie and beg. Lie means shoot bolna, beg means peak mangna. But actually the pronunciation is Liebig, and Liebig is the name of the scientist. Uh, just to make it funny and easier to memorize, I told you this. Moving on, what do? We take seawater. Now, seawater is already a mixture of a lot of salts in water. ठीक है, इसमें water भी है, इसमें salts भी हैं. What are we interested in? We're interested in water. तो हम इसे water के हिसाब से लेकर चलते हैं. हम क्या करेंगे? हम इसे heat करना शुरू करेंगे. हम इसे slowly heat करते हैं, ठीक है, और हमारे पास water जो होगा वो evaporate होगा. evaporate होने से उसके वेपर्स बनेंगे, वेपर्स राइज अप करेंगे. ऊपर से हमारे पास पोर्शन लॉक्ड है. हमारे पास सिर्फ एक डिलीवरी ट्यूब है जिससे वो राइट पे मूव कर सकता है. वो डिलीवरी ट्यूब इसे कंडेंसर तक ले आती है. कंडेंसर में हॉट वेपर्स जैसे ही पहुंचते हैं उनकी हीट एक्सचेंज होती है बाहर मूव करने वाले कोल्ड वाटर नॉर्मल टेम्परेचर वाटर के साथ. हीट एक्सचेंज होने का मतलब ये है कि वो वेपर्स जो है वो दोबारा कंडेंस करेंगे. जब वो कंडेंस करते हैं वो लिक्विड बन जाते हैं. Now you can see a downward inclined track. हमने यहाँ पर जो डिलीवरी ट्यूब रखी है उसका ट्रैक थोड़ा सा डाउनवर्ड इंक्लाइंड है, तो वो वाटर आहिस्ता आहिस्ता फ्लो करता ऑटोमेटिकली दूसरी तरफ आएगा. ड्रॉप बाय ड्रॉप कलेक्ट होगा एक सेपरेट फ्लास्क में प्योर वाटर की फॉर्म में. ठीक है, याद रखिएगा इस एक्सपेरिमेंट को पूरा करने के बाद जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे फ्लास्क में डिस्टिलेशन फ्लास्क में रह जाएगा वो रेजिड्यू होगा, और जो राइट हैंड साइड पे प्रॉब्ली इस वक्त हमारे पास इस स्पेसिफिक सिनेरियो में प्योर वाटर आ रहा है, दैट इज गोइंग टू बी नोन एज डिस्टिलेट. सो फिल्ट्रेशन और डिस्टिलेशन का प्रोसेस इस तरह से भी मिलता है कि हमारे पास जो बच जाता है बाकी मटेरियल हम उसे रेजिड्यू कहते हैं, और जो एक्चुअली मटेरियल जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं उसे फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में हम फिल्ट्रेट कहते थे, और डिस्टिलेशन के प्रोसेस में हम उसे डिस्टिलेट बुला रहे हैं. ठीक है, सो इट्स क्वाइट इजी टू रिमेंबर. तो इस तरह से हमारे पास ये सेपरेट हो जाता है. ठीक है, हम इससे आगे शुरू नहीं करेंगे सेपरेटिंग द मिक्सचर फ्रॉम लिक्विड फ्रॉम मिक्सचर ऑफ टू. why? Because that is not simple distillation, that is actually fractional distillation. So हमने आज सिर्फ यहीं तक ही करना है जिसमें हम जो है simple distillation